Hello, hello.
Hello everyone. We are starting the event now. Good evening, esteemed faculties, my dear friends and junior present here. A very warm welcome to all the dignitaries and all the curious attendees gathered here to grace the event. I, Shaurajan, welcome you all to the Tech Department ESET IIT DAVV Enlightening Tech Talk, a brief on web development for IITs. Tech Club is an initiative of ESET IIT DAVV to foster some technical skills among students of IIT, to sharpen the hidden talent among them in various aspects. We have various fields like web development, CPDSA, AIML, blockchain with knowledgeable students in this field to guide you all. As you all know, future is about tech and everything. Our today's speaker for is Pratham Rasal of CSA. He is self-taught Munstack developer. He is Chief Technology Officer at ArcLab. Hello everyone, am I audible? Yes, Pratham. Okay. So, good evening everyone. I am Pratham Rasal of CSA. It's been a pleasure to guide you all towards the journey to become a web developer. So, I welcome you all for the first session of Technical Club and we call it Tech Talk. Before we move on to the journey of web development, we must know what is a web development because in the whole journey, the biggest demotivating fact is we don't even know what we are doing and why and keep on self-doubting us. ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्यों कर रहा हूँ? And I assure you, each and every person here who is excelling in a field has said these phrases. So, what actually is web development? So, अगर Google की माने तो web development is the work involved in the developing a website for the internet. Web development can range from developing a simple single static page to complex web application and blah blah. पर अगर गूगल से समझना होता तो इस सेशन की क्या जरूरत सो इन लेमन टर्म्स अगर कहें सो एवरीथिंग यू ब्राउज ऑन इंटरनेट ईच एंड एवरी वेबसाइट यू सी किसी ना किसी ने तो बनाई होगी अपने आप तो कुछ नहीं होता सो दैट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड होस्टिंग दैट इज नोन एज वेब डेवलपमेंट अब वेब डेवलपमेंट वर्ड तो क्लियर होगा कि आखिर है क्या सब डेवलपमेंट कहते जरूर है पर बताता कोई नहीं तो अब मैंने बता दिया सो now, moving on to the types of web developer we have. So basically, there are three types: front-end developer, back-end developer, and a full-stack developer. अब ये है क्या आखिर front-end, back-end, full-stack? So for understanding this, let us take an example. Layman terms में अगर समझें, so आप एक 5 स्टार होटल में हैं, वहाँ एक शेफ होगा, बोले तो हलवाई, और एक होगा फूड डेकोरेटर. अब हलवाई क्या करता है पूरा खाना बनाता है कितना हल्दी नमक मिर्ची डालना है डिसाइड करता है फिर वो डेकोरेटर को दे देता है कि अब इसको अच्छे से सजाकर कस्टमर को दे दो तो अब इसमें हलवाई जो हुआ इसने पूरा बैकएंड में काम करा सब्जी बनाई वो हो गया एक बैकएंड डेवलपर फिर उस सब्जी को कस्टमर को कैसे प्रेजेंट करना है ये डिसाइड करा डेकोरेटर ने सो दैट इज फ्रंट एंड डेवलपर अब अगर टेक्निकली बात करें so front-end developer creates the user interface that determines what of each part of site or application does and how it will look. They are also known as client-side programmer. A backend developer is a type of programmer who creates the logical backend and core computational logic of a website, software, or information system. They are also known as server-side programmer. अब एक दिमाग में सवाल होगा कि अभी तक हलवाई की बात करी अब ये क्लाइंट साइड सर्वर साइड ये सब क्या हुआ सो
client is the customer you were serving, or technically, when you browse a website, your system becomes the client and server. And server was the हलवाई का kitchen जहाँ से सब खाना तैयार होके आ रहा था. So if we say technically, we can say the databases or servers where all the data is being stored is the server side where all the backend works. ये तो हो गई फ्रंट एंड बैक एंड की बात. अब ये फुल स्टैक क्या है? अब यहाँ एंट्री होती है प्रथम भैया की. अब प्रथम भैया को खाना भी बनाना आता है और उनको सजाना भी आता है. अब प्रथम भैया भी लाइक मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ. So the developer who can create the front end and back end both is known as full stack developer. So now if we talk about how can we connect our client side with the server, because these both are different fields, the front end will see the client side and the server side will be managed by a back end developer. So what is the relationship or how can we connect this front end with the back end? So here comes the role of APIs. Now what are APIs? Every one of you must have heard about API, पर समझ कभी नहीं आता है ये API है क्या. तो मैं बताता हूँ. किचन में खाना बना, फिर वहां से कस्टमर तक पहुंचाया किसने? कोई वेट्रेस होगी. So that waitress is actually working as API. So technically speaking, API stands for Application Program Interface, which is a software intermediary that allows two applications to talk to each other. So now it is clear that who is a front-end developer, who is a back-end developer, who is full-stack developer, and how to connect a front-end with back-end. These are through APIs. So moving on towards the tools and necessities which are required for a backend developer. So for development, you must have a computer with operating system. जैसे दुनिया में पैसा नहीं तो इज्जत नहीं, वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं तो डेवलपमेंट नहीं. अब कंप्यूटर आ गया तो ब्राउजर भी आ ही जाएगा. So browser is a necessity to see the output of what you code. So there are several web browsers available: Chrome, Firefox, Brave, Edge, Safari. So these are all the browsers. You can select any of them, and in the OS too, you can select any of the OS: Windows, Linux, or Mac OS. Now the question of conflict arises: what to choose as text editor? So different people suggest different editors. You can choose any editor you want, but make sure you are comfortable with it. And you must know the shortcuts for that editor too. My recommendation would be VS Code. VS Code comes with a huge set of extensions, which makes the development process much more easier and faster. So there are more text editors. You can use Sublime Text, Vim also, but my recommendation will always be VS Code. Now, once you get started, you will know the need of designing softwares and the terminal needs too. Before we develop any website, we need to design a prototype or wireframe some website. So for that, we use some designing software like Figma, Adobe XD, or Sketch. You can use any of the designing software as per your need or as you are comfortable with. Finally, we will move to the roadmap. अब इतना कह दिया कि डेवलपमेंट क्या है, कौन डेवलपर है, पर अब बताएगा कौन कि करना कैसे है. सो द रोड मैप मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट बेसिक फ्लो रिमेन्स द सेम. द फर्स्ट स्टेप for every developer is to learn HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language, which is used to structure a website. Now you may think, do we need to master it? I will say no. You don't need to because web development is a practical skill. You don't need to see a tutorial and go on to master it. You need to understand and code by yourself. So once you know the basic HTML, you can move forward to the second step, which is learning CSS. But the main question arises is HTML a programming language? The answer is no. HTML is not a programming language. It is a markup language. And CSS, now moving on towards CSS. CSS is cascading style sheets. The sites built in HTML are not attractive, so all the designing is done in CSS.
It is a vast language. Again, do we need to master it? My answer is same, no difference. No, you don't need to. You should know how to change the background colors, how to center a division, span, selectors, difference between ID and classes, flexbox property, grid properties. In the beginning, these are enough. Once you get on the track, you will learn more and more topics with the flow. Again, I'll say you don't need to master any skill in the beginning. You just need to create more and more projects. In the projects, you will come across various problems, and when you solve those problems, you will master the skills in the flow only. Now, the third step, which is the most important step in the web development journey, which is learning JavaScript. JavaScript is a programming language. In the beginning, it may be difficult for you, but with time, you will feel that it is the easiest language. All the logical programming of a website is done in JavaScript. Each and every developer must know JavaScript. You all must have listened those examples like skeleton is HTML, the skin and clothes are CSS, and the brain is JavaScript. JavaScript is the most important thing in a developer's life because JavaScript is the only language from which you can create the front end as well as the back end too. We'll come to the back end later, but here for all the animation purposes, like अगर आपको कोई पेमेंट करवानी है, आपको किसी बटन के क्लिक होने पर कोई इवेंट अकर करवाना है, जितनी भी सारी लॉजिकल चीजें हैं, that will be handled by JavaScript only. Now, these three steps are the most important steps and are need to be done to become a web developer. If you know just these three steps of knowing the HTML, then CSS and JavaScript, you can build any website. For optimization purpose, there are multiple more tools required, but with the help of only these three tools, you can do whatever you want in the website development. Now, moving on towards the extra tools, you can have SAS and Post CSS. It is not a necessity to learn, but it is a plus if you want to learn it. SAS is CSS preprocessor that adds to the functionality of CSS, whereas Post CSS tools is used for transforming the CSS with JavaScript. There are several needs when you need to change the CSS with the help of JavaScript. You all must have seen that dark mode is enabled by a click. So that all is being done with the help of Post CSS. By a click of single button, you can change the light theme to the dark theme. So for that functionalities, you can use the Post CSS. Now, moving on towards the front-end frameworks. This is the most important thing because only vanilla JavaScript, which is the normal JavaScript we use, is not enough to create some website which are efficient and search engine optimized. So for these purposes, we need to choose any framework. There are multiple frameworks available, but the most popular ones are React.js, AngularJS, Next.js, and Vue.js. For SEO purpose, you can use the Next.js, and for the other purposes, you can use the React.js. In the beginning, React is easier to learn than AngularJS, so the recommended and preferred framework we can say will be React.js for the beginners. Now, React for beginners, React is a free and open source front-end JavaScript library for building user interface based on the UI component. It is maintained by Meta, and the scope for React.js in today's world is very high. Now, as we see the front-end frameworks, there are multiple frameworks for the CSS too. Now, the CSS frameworks make the development much easier by providing a great support. You can learn any of the CSS framework. The most used and recommended CSS framework are Tailwind and Bootstrap. Tailwind and Bootstrap make it much more easier for you to for the development purposes. You don't need to create any other specific file for the CSS. You just need to add your CSS properties in the class name only, and you can apply those CSS there only. So Tailwind CSS and Bootstrap make it
very easy for the development. So we recommend to learn Tailwind and Bootstrap for all the beginners. Now, the deployment. Deployment means to host the website so anyone with internet access can see your website. There are several platforms where you can host your website. Some of the popular platforms are Netlify, Vercel, and GitHub Pages. You all must know GitHub. GitHub is used as version control. So GitHub also provide a functionality of GitHub Pages by which you can directly deploy your projects on the internet. So that was all for the front end. Moving on to the back end development. So by those frameworks and HTML, CSS, JavaScript, you can do all the front end. But for a dynamic website, you need a server. So for backend purposes, you must select a server-side language. There are multiple languages for the server. So for the backend development, you must choose a language to work on. There are many languages which are used to develop backend. The languages recommended are Node.js, which work on JavaScript, and Python. Node.js is preferred as it allows us to develop front-end and back-end both in JavaScript only. Python is preferred when the website requires too much processing of data and some data science and artificial intelligence is required, then we prefer Python. There are two frameworks of Python by which we can develop the backend. We will learn about that later. So the backend frameworks. The frameworks make it easier for developers to use several functionalities. Express.js is a framework for Node.js, is the most widely used framework with Django framework of Python. There are several more frameworks such as Flask, Flask framework of Python, which is ready to go framework, which allows you to develop backend much faster. So there is lot of confusion which framework to choose. So depending on your project, it depends which backend framework you should use. If the project is being done in the Express.js or you can is done in the JavaScript, then it is preferred to use the Nest.js or Express.js. So you can complete it with the MERN stack. MERN stack is using the MongoDB as your database, Express.js as your framework, then React as your front-end framework, and then at last Node.js as your backend language. So MERN stack is often known as the efficient for web development purposes. There are two types, MERN stack and mean stack. MERN stack includes front-end framework of React and mean stack includes Angular as the front-end framework. So now for choosing between Django and Flask, this is a question many people ask, what to choose in Python, Django or Flask? So the answer is very easy. You need to see if your project is a complex project or a simple project. By mean of simple project, there is not a lot of programming needed. So for that type of projects, you can use Flask because it is a ready to go server side framework. So in Flask, you can do all of these just by creating a Flask framework. But if your project is complex, then I will recommend you to work with Django. So moving on to the now comes the most important part, which is databases. Databases are very important for any website. There are two types of databases, SQL databases and NoSQL databases. Many pronounce it as SQL database and NoSQL databases. So no difference. So SQL databases stores the data in the form of tables and there are relation between tables. On the other hand, NoSQL databases uses document format, which is key value pairs to store the data, and it is much more flexible than the SQL databases. It is much more flexible, but that doesn't mean that SQL type of databases are not used. SQL databases are used too, but we choose it according to our need. If we want the relations between our tables, then we will always choose the SQL databases. But if we do not have any constraint like this,
Then we will go to the more flexible option, that is no SQL databases. So example of SQL databases are MySQL, PostgreSQL, and for the NoSQL databases, MongoDB and Firebase is recommended. Firebase is a Google's database, so it is preferred more as it provides several functionality as real-time database and authentication too. So moving on to the deploying of your full stack projects. Now, how to deploy the full stack projects? If you create some full stack projects, then this is always a doubt how to deploy it, because it is not as easy as to deploy a static page, because you need to deploy the front end as well as back end too. So now comes where to deploy. So our full stack project, so you can deploy it on Heroku, which is free, and there are some paid platforms like AWS and DigitalOcean are also there. You can deploy the projects by containerizing and virtualization, which is an advanced topic of DevOps. For beginner, Heroku is preferred and recommended. At last, how to get those domains like .com. You must have all come across these domains .com and .in. So how to get those? So these domains are always paid domains. So you have to buy them. You can do so by going on to the GoDaddy, Grooming.com and Namecheap. So this was all about the web development roadmap, how to do it, the resources. There are much more resources available on the YouTube. Udemy is there. So for the resources, you can go anywhere. Again, I'll say, don't need to master any particular skill. You just need to create more and more projects. So by projects only you can learn. As I said earlier too, the web development is a practical skill. So it is not only limited to learning from tutorials, it is all about coding. So you just need to practice it by coding. By watching the tutorials, you can learn the concepts only. But if you say that you can just see a tutorial and you can gain the knowledge of web development, so that is not at all true. You just need to do is watch the tutorial, then create a project on it, understand all the concepts, and after the project learn how to deploy it. The main thing which comes is Git and GitHub. GitHub is a version control system which is very important when you work in a team, because if you don't have GitHub or any version control system, how will you share your code? So for sharing your code with your colleague or with your teammate, you need to have a version control system. What is the version control system? It keeps account of all of your changes you have done on the project. One, you can say the alternative was to zip your code and send it, but it do not keeps an account of your changes. So the better would be use the GitHub. It is a very recommended skill for working in any organization. You must know GitHub. It is not that tough to learn GitHub. When you work on any project, try to push your code on the GitHub using it. Okay, so this was all about. So that's all from my side, guys. Thank you for being there. Thank you. I thank Pratham Rasal for guiding the session in the best possible way. So guys, अगर session अच्छा लगा हो तो send the thumbs up वाला emoji in the chat box. Are you excited or not? Guys, कैसा लगा session? ग्रेट, अच्छा लगा ये देख के कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा. आगे भी हम ऐसे ही सेशन करवाते रहेंगे.
Students who have any questions may raise their hand or ask in the comment section. क्वेश्चंस के पहले मैं असाइनमेंट का बोलने वाला था. हेलो. हाँ, you yes, can Naman. continue. Continue. सो हेलो एवरीवन. आपका असाइनमेंट है नासा ऑर्गेनाइजेशन के लिए चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट बनाना है आपको. तो इसमें कोई डाउट है किसी को? मुझे रिस्पांस चाहिए. किसी को कोई डाउट है? नासा ऑर्गेनाइजेशन के लिए चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट बनाना है. अरे कुछ तो डाउट होगा भाई. सो रहे हो क्या सारे? सर क्या बनाना है, कैसे? वही यार, पहली बात तो चंद्रयान 3 नासा का नहीं, मैं यही सुनने वाला था. हाँ देखो, किसी ने मैसेज किया इसरो का है. चलो मतलब तुम लोग जाग रहे हो. चलो तो अब सुनो ध्यान से. क्या है असाइनमेंट? असाइनमेंट है आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है अपना खुद का. आपको अपना खुद का HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट वगैरह यूज़ करके आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है और उसको गिटहब प्रोफाइल पे अपनी अपलोड करना है और उसकी लिंक गूगल फॉर्म में सेंड करनी है. तो अब इसके मैं पहले आपको एडवांटेज बता रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट से आपको क्या क्या एडवांटेज होंगे. तो पहला तो एडवांटेज होगा कि ये पोर्टफोलियो बनाना आपके लिए फर्स्ट स्टेप होगा वेब डेवलपमेंट में. मतलब जिनको भी अभी वेब डेवलपमेंट आता है, चाहे वो स्टार्टअप कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, शायद उनका पहला प्रोजेक्ट यही रहा होगा अपना पोर्टफोलियो बनाना. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर चुके हो. तो सबसे पहला एडवांटेज तो इसका यही है. और दूसरा एडवांटेज ये है कि आपके लिए एक आपका पर्सनल पोर्टफोलियो हो जाएगा. मतलब अभी कई लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो वेब डेवलपमेंट में बहुत आगे मूव कर चुके हैं लेकिन उनका कोई पोर्टफोलियो नहीं है. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि बिगिनर्स में ही आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो मिल जाएगा. और इसका तीसरा एडवांटेज ये होगा कि जो आप में से सबसे अच्छे पोर्टफोलियो आएंगे, मतलब सबसे अच्छे मतलब जिनने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया होगा अच्छे वे में, स्मार्ट वे में, जिनने बहुत सारी चीज़ों का ये यूज़ किया होगा, जैसे रिएक्ट हो गया या फिर जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल हो गया, वो सब चीज़ें यूज़ की हों, तो उनको हम और सारी अपॉर्चुनिटी देंगे. जैसे कि ईसेल की वेबसाइट बनाने के लिए या फिर और भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, तो हम आपको उसकी अपॉर्चुनिटी देंगे. तो ये आपके बेनिफिट्स हो गए. अब इसके लिए किसी को कोई डाउट है फिर असाइनमेंट से रिलेटेड तो कुछ पूछ सकते हैं. हेलो. नहीं है तो ओके लिख सकते हो, आपकी नहीं है. One more thing that I would like to add कि अगर तुम में से किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ ही पूछना हो, जैसे प्रथम ने जो एक्सप्लेन करा है या फिर वेब डेवलपमेंट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में पूछना हो, तो तुम अभी पूछ सकते हो. यहाँ पर जो भी डाउट है वो अभी के अभी या तो चैट बॉक्स में लिखते हो या जैसे भी जो भी पूछना चाहे एक बार पूछ सकते हैं यहीं पर अभी इस टाइम पर. और हम एक ग्रुप फोटो लेने वाले हैं आखिरी में, तो सब लोग अभी रुक जाना, Q&A सेशन हो जाए उसके बाद. और इसमें आप मतलब इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो. आपको कोड कॉपी नहीं करना है, आप आइडिया कॉपी कर सकते हो. मतलब आप किसी का देख सकते हो पोर्टफोलियो, तो वो आप बिल्कुल कोडिंग का मतलब ही है कि आप बाहर का प्रोजेक्ट देखो और आपके मन में कोड आना चाहिए कि हाँ यहाँ पे डेव टैग होगा, इसको ऐसा करेंगे तो ये यहाँ पे इतना मार्जिन होगा. तो वो आपकी प्रैक्टिस होगी. तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि कहीं से आप आइडिया ले सकते हैं प्रोजेक्ट का और उसके बाद आप मूव ऑन कर सकते हैं. तो क्वेश्चन अगर कोई हो तो रिस्पॉन्सिव, हाँ बिल्कुल आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो भाई. रिस्पॉन्सिव बनाना आपके लिए अच्छा होगा, आपको उसमें जाना पॉइंट्स नहीं होंगे. पीपीटी शो कर दे अगर तेरे पास रखी हो तो. हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ. एक्चुअली मैं फ़ोन से कनेक्ट हूँ तो कोई भी पीपीटी शेयर कर सकता है. आप में से ऋषि, अगर प्रथम तुम कर दो.
हेलो, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ये डेडलाइन इसकी 23 जुलाई तक रहेगी, 11:59 PM। और ये मैंने बता ही दिया है, सबमिशन आपको गेटअप रेपोजिटरी बना के करना है, गेटअप पे अपलोड करना है अपना प्रोजेक्ट, और उसको गूगल फॉर्म में आपको सबमिट करना है। अच्छी ग्रेडिंग के लिए आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं कोड में, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का अगर आप ES6 मॉड्यूल यूज़ करके कुछ बनाते हैं तो वो मतलब जितना अच्छा आपका होगा वैसे ही आपकी मार्किंग होगी। और एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, मतलब जो बिगिनर्स हैं अभी, मतलब जो HTML CSS अभी सीख ही रहे हैं, तो वो ये नहीं सोचें कि ये प्रोजेक्ट बनाना बहुत बड़ी बात है या फिर हम ये सब कर नहीं पाएंगे, इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप ये प्रोजेक्ट 2 दिन में बना सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो, थोड़ी HTML, थोड़ी CSS, थोड़ी जावास्क्रिप्ट सीखो, तो ऐसा नहीं आप नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हो। तो आपको घबराना नहीं है, सीधी बात कि इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप सिंपल बना के दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका पहला स्टेप होगा वेब डेवलपमेंट में, तो आप बिल्कुल बना सकते हो। बिफोर Q&A राउंड, एक बार जाने से पहले गाइस कैमरा ऑन कर लेते हैं ग्रुप फोटो के लिए, सो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। गाइस कैमरा ऑन कर लो। हाँ गाइस, सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो एक बार। क्या आए थे यहाँ पर, अगर यहाँ पर हो सब लोग तो। ओके ग्रेट, नाइस। ओके गाइस, थैंक यू। अब अगर जिसको भी Q&A सेशन में कुछ भी डाउट्स हो पूछने के लिए, तो हमारे साथ यहाँ पर संजय सिंह राजपूत प्रेजेंट है। जो भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर तुमको गाइडिंग में भी कुछ समझ में नहीं आया हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। गाइस, प्रथम ने इतना सारा समझाया, आपको उसमें से एक भी डाउट नहीं है? या तो ये बहुत अच्छी बात है या फिर कुछ तो है, आपको डाउट होना चाहिए। संजय, क्वेश्चन आए iOS डेवलपमेंट को लेके, तो इसको
इन्फो अबाउट iOS डेवलपमेंट, स्विफ्ट यूज़ करो iOS डेवलपमेंट के लिए तो, और फ्लटर यूज़ कर सकते हो उन दोनों चीज़ों के लिए। वैसे तो देखो मेरा वेब डेवलपमेंट मेन है, बाकी iOS डेवलपमेंट के लिए तुम फ्लटर से स्टार्ट कर सकते हो, मेक सम प्रोजेक्ट्स, जैसे कि एक टू डे एप्लीकेशन ऐप है तो वो बना सकते हो iOS डेवलपमेंट के लिए, बेस्ट ऐप है वो स्टार्टिंग में। उसके बाद एक वर्क मैनेजमेंट करके एक ऐप बनती है, वो बना लो, तो प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो तुम। और iOS डेवलपमेंट के सेशन हम आगे लेंगे, अभी तो हमने नॉलेज चेक करने के लिए लिया था इवेंट कि कितना है ऑडियंस का नॉलेज, और फिर हम उस हिसाब से आगे इवेंट रखेंगे। तो आगे एंड्रॉयड और iOS दोनों के रहेंगे कोर्सेज, और डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स भी हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट।